Hello 9th standard students, I'm here with my another video based upon magnetism. So in this video we are going to start from induced magnetism, that is magnetism induced by a bar magnet on the magnetic materials. So बेटा यहाँ हम डिस्कस करने वाले हैं कि कैसे किसी अनमैग्नेटाइज्ड बार को, जैसे सॉफ्ट आयरन या स्टील का बना हुआ है, इसको हम क्या बनाएंगे, मैग्नेट बनाएंगे बाय कीपिंग मैग्नेट इन कॉन्टैक्ट विद दिस. ओके, सो यहाँ पर हमने क्या ले रखा है, सी हियर वी हैव टेकन एन आयरन और स्टील बार. ठीक है, इसके पास हम लेके आते हैं बेटा एक मैग्नेट को, सो दैट वी कीप द साउथ ऑफ माई मैग्नेट टुवर्ड्स द आयरन और स्टील बार. नाउ व्हाट विल हैपन बेटा, क्या होगा कि जो थोड़ी देर बाद ये जो आपका आयरन या स्टील बार जो आपने ले रखा है, इट विल ऑल्सो स्टार्ट बिहेविंग एज अ मैग्नेट. ठीक है, ये कैसे पता चलेगा कि जो आयरन फिलिंग्स हैं, लाइक आयरन पाउडर जो होता है, इट विल स्टार्ट अट्रैक्टिंग दीज आयरन फिलिंग्स टुवर्ड्स इट. ये क्यों हुआ बेटा, इट हैपन ड्यू टू द इंड्यूस्ड मैग्नेटिज्म. ठीक है, सो व्हाट इंड्यूस्ड मैग्नेटिज्म इज एक्चुअली the temporary magnetism acquired by a magnetic material when it is kept near or in contact with the magnet, that is called as induced magnetism. जब आपने किसी भी magnetic material को, जैसे आयरन या स्टील को, मैग्नेट के पास रखा तो उसमें मैग्नेटिक करेक्टर आ जाता है. दिस इज कॉल्ड एज इंड्यूस्ड मैग्नेटिज्म. ठीक है, सो द प्रोसेस इन विच अ पीस ऑफ मैग्नेटिक मटीरियल एक्वायर्स द मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज टेम्परेरीली इन प्रेजेंस ऑफ अनदर मैग्नेट नियर इट इज़ कॉल्ड एज मैग्नेटिक इंडक्शन. सो ये जो प्रोसेस हो रहा है जिसमें कोई भी मैग्नेटिक जो मटीरियल है वो मैग्नेट बन रहा है इन द प्रेजेंस ऑफ मैग्नेट, दैट इज़ कॉल्ड एज मैग्नेटिक इंडक्शन. ठीक है, एंड आपने याद क्या रखना है, इसका मेन चीज़ है दैट दिस इज़ टेम्परेरीली. टेम्परेरी मीन्स जितनी देर तक के लिए आप मैग्नेट को इसके पास रखोगे इट विल बिहेव एज अ मैग्नेट. जैसे ही आप मैग्नेट को दूर ले गए इट विल बिकम सिंपली एन आयरन पीस और स्टील बार. ठीक है, सो इफ पोलैरिटी एट द एंड्स ए एंड बी ऑफ अ बार मैग्नेट ए बी इज टेस्टेड विद द कंपास नीडल, it is found that polarity developed at the end A is north and the polarity at the end B is south. Okay, means आपने क्या याद रखना है कि नियर वाले एंड पे बेटा ऑपोजिट पोलैरिटी डिवेल्प होती है और फार्दर वाले एंड पे हमेशा सिमिलर पोलैरिटी डिवेल्प होगी. ठीक है, मीन्स इफ़ यू आर कीपिंग अ बार मैग्नेट नियर एन आयरन बार, suppose this is the, you are keeping north near this bar magnet, the near end that will acquire the opposite polarity and the farther end that will acquire the same polarity. So here south आएगा and the farther one will acquire the similar polarity. ठीक है, सो जो नियर वाला एंड है उसके ऊपर नॉर्थ का उल्टा साउथ बनेगा और जो दूर वाला है उसके ऊपर नॉर्थ बनेगा. ठीक है, दिस इज कॉल्ड एज मैग्नेटिक इंडक्शन. ठीक है, सो उसके बाद आता है हमारे पास इंडक्शन प्रीसीड्स अट्रैक्शन. सो सी हियर we can explain how an ordinary piece of iron is attracted towards a magnet. So when a piece of iron is brought near one end of the magnet, the nearer end of the piece acquires an opposite polarity by magnetic induction, as you explained here. Since unlike poles attract each other, therefore iron piece is attracted towards the end of the magnet. Thus piece of iron first become a magnet by induction and then it is attracted. I think now you might got what is the meaning of this लाइन. इस जो ये आपके हेडिंग है इसका मतलब ये है कि पहले कोई भी जो ऑब्जेक्ट है, मैग्नेटिक मटेरियल है, वो पहले क्या बनेगा बेटा, इंडक्शन की हेल्प से फर्स्ट इट विल बिकम अ मैग्नेट, देन इट विल स्टार्ट अट्रैक्टिंग द अनदर थिंग्स टुवर्ड्स इट. Okay, so induction precedes attraction means first due to induction it will become a magnet and then it will do the attraction, then it will attract the objects towards it. Okay, then induced magnetism is a temporary. ये हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं कि जब तक आप किसी मैग्नेट को, बार मैग्नेट को किसी ऑब्जेक्ट के पास रखोगे it will behave as a magnet. As soon as you take it away from the object it will turn into a simple iron piece or a steel bar. यहाँ पे भी हमने क्या किया बेटा, we have taken a bar magnet. ठीक है, आप इसके पास iron nails को लेके आए. So when one iron nail approaches it, so this is the north polarity, so nearer end will acquire south polarity, that is the opposite polarity, and farther will be north. Another nail जो है वो इसके पास आएगी,
This is, if this is north, this will require south, and then again north. Another nail, that is north, again south. So like this it will make a chain of the nails. ठीक है, but this is only possible as soon as bar magnet is near it. अब आप क्या करेंगे, जैसे ही हम क्या करते हैं, whenever if we are going to remove the bar magnet, if you remove the bar magnet, what will happen, we will find that all the nails fall down. सारे की सारी जो nails है वो बेटा गिर जाएंगी. रीज़न क्या है, on removing the magnet the uppermost nail loses its magnetism. ठीक है, सबसे पहले जो सबसे ऊपर वाली nail है उसका magnetism ख़त्म हो जाएगा. As soon as it loses its magnetism, second nail will lose, then third nail will lose, and so on. This will happen. So this shows that the magnetism acquired by induction is purely टेम्परेरी. सो आपने क्या याद रखना है कि जो मैग्नेटिज्म होता है बेटा ड्यू टू इंडक्शन, दैट इज़ प्योरली टेम्परेरी. ओके, सो इट लास्ट सो लॉन्ग एज द मैग्नेट कॉजिंग इंडक्शन रिमेन इन इट्स विसिनिटी. तो जब तक वो इसके पास पड़ा है, बार मैग्नेट पड़ा है, तब तक कोई भी ऑब्जेक्ट जो है, मैग्नेटिक ऑब्जेक्ट जो है, इट विल बिहेव एज ए मैग्नेट. एज सुन एज यू टेक इट और अवे और यू रिमूव इट, इट विल लूज इट्स मैग्नेटिज्म. नेक्स्ट व्यू पीपल हैव लाइंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड. क्या होती है बेटा, सो जैसे बेटा आपके पास मैप होता है, मैप जिसके ऊपर आप माउंटेन्स, रिवर्स, सिटीज़, ब्रिजेस, रेलवे ट्रैक्स शो करते हो विद द हेल्प ऑफ लाइंस. इसी तरह से अब जो मैग्नेटिक फील्ड है किसी भी मैग्नेट की, वी कैन नॉट सी इट. सो व्हाट वी डू, वी ड्रॉ लाइंस टू रिप्रेजेंट्स इट्स फील्ड. इसका जो एरिया है बेटा, इसकी जो फोर्स है, इसका जो इफेक्ट है, उसे हम शो करने के लिए हम क्या करते हैं, वी ड्रॉ द लाइंस. दीज लाइंस आर कॉल्ड एज मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस. ओके, उसके लिए व्हाट वी डू, वी यूज़ अ मैग्नेटिक कंपस. ठीक है, सो इफ वी प्लेस अ मैग्नेटिक कंपस ऑन अ टेबल, इट्स फाउंड दैट इट्स नीडल रेस्ट इन geographic north south direction. But when it is placed near a magnet, the needle swings and then rests in some other directions. ठीक है, there is a difference. Without magnet, it rests in geographic north south direction always. लेकिन जैसे ही आपने इसको किसी बार मैग्नेट के पास रखा, ये other than north south में swing करेगी बेटा. ठीक है, so as the compass is placed at different position around a magnet, direction in which the needle rests changes such that its one end always points toward the nearer pole of the magnet. This behavior of needle is due to influence of the magnet near it. So बेटा ये जो मैग्नेटिक कंपास की नीडल जो है वो नॉर्थ साउथ से अदर डायरेक्शन में स्विंग कर रही है. ये किसका असर है बेटा, दिस इज द इफेक्ट ऑफ फील्ड अराउंड द मैग्नेट. सो द रीजन इन विच द कंपस गेट इन्फ्लुएंस, तो वो रीजन जिसमें कंपस आपकी सुई जो है वो इन्फ्लुएंस हो रही है, उसके ऊपर असर आ रहा है उस फील्ड का, दैट इज कॉल्ड एज अ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड ऑफ द मैग्नेट. सो स्पेस अराउंड अ मैग्नेट इन विच द नीडल ऑफ अ कंपस रेस्ट इन अ डायरेक्शन अदर दैन द जोग्राफिक नॉर्थ साउथ डायरेक्शन. द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट इन विसिनिटी ऑफ अ मैग्नेट जो कंपस है बेटा, इट विल ऑलवेज पॉइंट इन other than north south direction. ठीक है, that is called as magnetic field of the magnet. ठीक है, so उसके बाद magnetic field is a vector quantity. It has direction as well as it has a particular magnitude. ठीक है, आपने याद रखना है इसकी particular direction है as well as it has a specific magnitude. So this is the figure. How does the magnetic field lines look like? See, they originate from north and goes towards the south. Afterwards, we will show them with the help of arrows. So this is the direction and this is the shape of the magnetic field lines due to this bar magnet. Okay, so afterwards we will discuss that these lines originate from north and terminates at south. So their direction outside the bar magnet is from north to south. So magnetic field line is a continuous curve in a magnetic field such that tangent at any point of it gives the direction of magnetic field at that point. So what does it mean? It means that beta, if this is a bar magnet, this is a bar magnet, and suppose I'm drawing this magnetic field here, magnetic field lines. So if I draw a tangent, you know, the line making 90 degree with the periphery. So I'm drawing different tangents on it. So each tangent is giving me direction of the magnetic field. See,
each tangent, so it's terminating from north and starting from north and terminating at south. So each tangent gives me direction of the magnetic field in which the line, that is magnetic field lines, is moving. फिर है इसकी प्रॉपर्टीज बेटे. सो दे आर क्लोज्ड एंड कंटिन्यूस कर्व्स, closed and continuous curves. So we are only just looking at the outside figure of this one. Actually they are like this beta, they are like this, they are outside as well as inside. So they are always closed and continuous curves, then don't break anywhere. Okay, then outside the magnet, they are directed from north towards the south pole of the magnet. So already we discussed, they always start from north and terminates at south pole. Then the tangent at any point of a field gives the direction of magnetic field, that we discussed over here. That tangent at any point, we find what is the direction of magnetic field at that point. Okay, and very important point about the magnetic field lines, they never intersect each other. Two magnetic fields, suppose we have one Q and one R magnetic field of line, so they never intersect each other. So if two lines will intersect, so it will mean that magnetic field has two direction, and you know beta, this is not possible. Magnetic field has only one direction, that is from north to south. So two magnetic field lines never intersect each other. They are always crowded near the poles. So poles के पास बेटा हमेशा ही जो magnetic field lines होती हैं, they are always crowded. This shows that maximum magnetism of the magnet is at the poles. Okay, then you have parallel and equidistant uniform field lines present a uniform. So parallel and equidistant line, ये जो आपके पास magnetic field lines हैं, those are parallel to each other as well as those have equal distance between them. They represent a uniform magnetic field. It means किसी लिमिटेड एरिया में अगर हम अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड निकालें तो वो कुछ ऐसी होगी. एंड दे बिहेव लाइक अ स्ट्रेच इलास्टिक रबर बैंड स्ट्रिंग. सो हेयर यू कैन सी रबर बैंड स्ट्रिंग भी कुछ ऐसा ही नज़र आता है जब आप उसको क्या करते हो, स्ट्रेच करते हो. सो दे बिहेव लाइक अ stretch rubber band string. So enough for this lecture beta. In our next lecture we will discuss magnetic field of earth, that is the evidences of existence of earth's magnetic field. Thank you very much.